Hi, Sudhanshu. Yeah. Hi, am I audible? Yeah, Yes, sir. Yeah. First of all, Shivangi, be comfortable. Yes, Are sir. you comfortable? Yes, sir. Yeah. So tell me something about you. Good evening, sir. My name is Shivangi Divedi, and I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Currently, I am doing MCA in Data Science from NIT Patna, and I have done in Bachelor's in Mathematics from Gorakhpur University. And one of my strengths is that I am a quick learner. I love to explore new skills and learn a lot from other people who are good enough from me in those skills. And one of area where I am working upon is public speaking. I am a little bit nervous while speaking in front of group of people, so I am working upon that thing. Yeah, it's okay. Then tell me on which language you are familiar or in which language you are comfortable. Python, C++, Java. In Sir, I which am language? learning right now Java, and I have done little bit work on Python as well. But right now I'm learning Java. Yeah. A little. Yeah, okay. First question, is indentation required in Python? Sorry, sir. Is indentation required in Python? Yes, yes, sir. It is. Yeah, that's fine. Yeah. As you said, you are learning, you are enrolled in BS in data science, no? MCA in data science. Yes, sir. Yeah. Then can you tell me something about univariate, bivariate, and multivariate analysis of a dataset? Mm, no, sir. I don't know about this thing. No, not either univariate, bivariate, or multivariate. Yes, sir. Yeah, it's okay. Uh, can you tell me something about the steps you would take to analyze a dataset? Analyze a data set. Yeah, you are Um, given a dataset, either in the form of CSV or an Excel file. Then, what would be your steps when you go for analyzing that entire dataset? Sir, can you please repeat the question? What are the steps you would take to analyze a dataset? Um, Means let's suppose we are giving a data set in the form of CSV file or in Excel file, contains approx yes, sir. 10,000 rows and columns. Then what Yes, would sir. you take? What are the various steps you would take to analyze the data set? Means find out the insights. Sir, Means you have to find. we'll work on. Yes, sir. So we will work upon the statistics, the data which is provided. We will check the values and it depends on what type of data we are given, and the if they like there are two companies and we want to compare between the profit and loss type of things, then we will compare the sales and the customer feedback and all that, those things. Yeah, what you needs to learn a lot, I think. So then third Yes, one sir. question I'm is in first year only. no. You know what data cleaning and Data? data cleaning, data cleaning or wrangling, data wrangling. No, sir. You don't know even this? Are you aware about normalization, data normalization? Yes, sir. Data normalization. Yeah. Can you explain this? So normalization means if we have a lot of data, it becomes little bit problematic to handle those data. If we insert or delete or update some values, it will create some anomalies. And to solve those anomalies, we used to break those content of data to into smaller parts that help us to manage that data more efficiently. So we do normalization. Then can you tell me some normalization technique? Normalization, yes, we have one normalization, 1NF, 2NF, 3NF, and BCNF. Yeah. Okay. Then you know about testing, hypothesis testing?
What, sir? Hypothesis testing. Hypothesis testing? No, sir. Of outliers and how No, to sir. solve the outliers. You even No, sir. yeah, okay, fine. Then yeah, can you walk me through the architecture of your online bidding project? Yes, sir. Architecture. We have, yes, sir. We have created that project using Python and connectivity with MySQL connectivity, and in that project we have created different data. We have created a database and different tables in that database where we have three type of users. The first one was admin, the second one was the person who want to sell his or her product, and the other one was the buyer. And in that project we have applied we have applied different features, like the admin can add or remove the users as well, and the buyer can place his or her bid, and the seller can approve or deny that bid. So that was all about that project. Yeah. And what challenges did you face while integrating MySQL with Python in the bidding system? Yes, sir. Sir, actually, we were totally new for this MySQL connectivity. So we were at first we were not like we were not knowing anything. So we took help from our teacher, and in that field, first we are not familiar with database subject as well. It was in our next semester. So we created the database and the tables, and the codes and the different we were not friendly with those things, like we have to put some constraints on the input which we have to fill in the tables of database. So at that point we were not able to do those things, but we learned with the help of internet and our teacher as well. So that's what it Yeah, is. fine. Then tell me something about your file organization project. File organization. Yes, sir. In that project, the simple idea was that to the if the desktop is filled with a lot of files which are scattered here and there, the idea was to just manage those files on the basis of extensions. Like PDF files will be organized in one folder, and other extension files will in different folders, so that the user can simply go on that folder and click on those files and use those files. Yeah, use the framework OS dot certain. It's a basic way to organize the data. So in your folder organization project, how did you Yes, sir. handle errors during file organization? Uh, Sir, I didn't got your answer question. How did you handle errors during file organization? Means you are giving a lot of files, na? Whether using Yes, sir. someone would be in PDF files, the file there Yes, would sir. be a various file extensions. Then Yes, sir. how you encounter that problem? Okay, sir. In that project, actually, we have just like if there is a download folder, and in that folder there are different extension files. So simply the user have to give the path of that folder, download folder, and in that code we have written manage put all the files of same extension in one folder. So Okay, okay. Yeah, wait a second. Can we pass a function as an argument in Python? pass the function as argument in Python. Um, Yeah, am I audible? yes, sir. Um um Yeah, okay, take your time. no, sir. No, are you confident? No. Confirm? I am not confident. Yeah, I think we cannot.
Just be confident and whatever things you know, just tell. No any issue. It's not a real interview, okay? Right. It's a preparation Yeah. interview. So just be Yeah. confident Yeah. and Be whatever things comfortable. you know, just say to us. No, don't worry. We are not here to judge you, okay? So Yeah. Yes, sir. just answer the question. No issue. You will say wrong. Be Just basic things. Sudhanshu Yeah. will give the Be whole confident. preparation, okay? Not a issue. Yes. Yeah. Yeah. Can you say something difference between a mutable data and immutable data? Data type, Yes, sir. mutable and immutable Immutable. data type. Yes, sir. Mutable data means Yeah. that we cannot change that data, and immutable means we can change its value. That's right. Are you aware of NumPy or Pandas? Yeah, those are libraries of Python. Yeah. How are NumPy arrays different from Python list? Sir, I have not worked upon those libraries. I don't know anything about them. Oh, same with Python? Oh, Pandas? No, sir. Yeah. Are you aware of I'm learning the only visualization? these language. Yeah. No, it's not. It's just a framework. It's what you can say. Are you aware of visualization technique? Means Power BI Tableau. No, sir. You even do not know. Yeah. Okay. Then a second. Okay, Sudhanshu. I think he is very beginner to in data science. So It's fine. okay, not a Yes. issue. You told first you know Java. Okay, Yes, sir. I'm learning Java right now. you are learning Java. Have you solved problems on lead code? Do you know DSA? Uh, yes, sir. How many questions you solve in lead code? So lead code, sir, I am doing DSA questions only. So lead code, I think 30 to 40 questions. Okay, no issue. So you are preparing for lead code and you are also preparing for data science as well. Yes, sir. Actually, data science has a in data science we have a subject of data structures and algorithms. Okay. So 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 in data structure you learn data structure in Java. yes, sir. Okay, okay, not a issue. So what we review now, Shivangi? You are very beginner to data science and all. You Yes, sir. so मैं तो आपको खुश नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि Yes, sir. तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो Mm, आपको अभी आप बहुत ही मतलब आप बेसिक आपको बेसिक्स भी नहीं पता है, ठीक है। mm, फर्स्टली mm. आपको प्रिपेयर वेरी हार्ड और आपको Yes, sir. 6 से 8 महीने देने होंगे Uh, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है, ठीक है। mm. Yes, sir. ये जॉब और प्लेसमेंट बहुत मुश्किल से मिल रहा है, इनफैक्ट आईआईटीज में भी 30% लोग का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। Yes, sir. आईआईटीज एनआईटीज में भी नहीं हो रहा है। आप वो फील करती होंगे, आप तो कॉलेज में देखते भी होंगे कि व्हाट्स इज Yes, sir. गोइंग इन द कॉलेज एंड ऑल। तो आप एकदम Mm. जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहोगे ना, तो नहीं होगा। मेरे को तो लगा था कि आप एनआईटी पटना से हो, तो मेरे को लगा था कि आप तो कम से कम फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग राउंड तो पास कर ही लोगे। बट Yes, sir. बेसिकली व्हाट वी डू ना शिवांगी कि वी टेक इंटरव्यू फ्रॉम द टॉप कॉलेज ऑफ टॉप स्टूडेंट्स और फिर हम Yes, उनको sir. 3 राउंड लेते हैं हम। एक था सबसे पहला स्क्रीनिंग राउंड, तो अभी आपका स्क्रीनिंग राउंड हो रहा था। और उसके बाद हम Mm, लेते हैं मॉक मॉक इंटरव्यू, फिर मॉक mm. इंटरव्यू। तो जो 3 पास क्वालिफाई करते हैं तो वी डायरेक्टली प्रोवाइड रेफरल्स। हमारे पास रेफरल्स होते हैं फॉर टॉप 10 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, तो हम आपको रेफरल्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी आप बहुत ही बिगनर हो, ठीक है। अभी आप Yes, sir. बेसिकली अभी आप लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में होंगे। Yes, sir. Second semester. हाँ, सेकेंड सेमेस्टर एमसीए में होगे। Yes, sir. तो आप सही से अभी थोड़ा नॉलेज गेन करो। और वी आर लॉन्चिंग डेटा साइंस कोर्स एज वेल। सो वहाँ पे Mm. बहुत ही अच्छे से आपके पास मेंटर आएंगे और मेंटर लाइव आके आपको पढ़ाएंगे। तो आपको बस छः Yes, sir. से आठ महीने लगाना है और आपको मेहनत करना है। और 6 से 8 महीने बाद आप खुद देखोगे कि आपको जो क्वेश्चन सुधांशु पूछ रहा था, नमपाई पांडास पावर बीआई, और इतना ही नहीं है, और भी है। मशीन लर्निंग की पार्ट है, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग है, फिर कुछ एआई टूल्स है। तो आपको सारा कुछ पता होगा जस्ट आफ्टर 5 to 6 मंथ। तो व्हेन वी विल Yes, टेक अनदर yes, मॉक sir. इंटरव्यू ऑफ योर्स, तो उस टाइम पे आपको एवरीथिंग पता होगा।
तो और इंटरव्यू में जब भी आना है तो कॉन्फिडेंस से आना है, भले ही आए चाहे नहीं आए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और इंट्रोडक्शन में वो सारे स्किल्स को मेंशन करना है कि जो स्किल्स आपको आता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में वो स्किल्स मेंशन ही नहीं किया था कि मेरे को ये स्किल्स आता है, तो आपको वो स्किल्स भी मेंशन करना होगा। और जो Okay. प्रोजेक्ट आपने बनाए थे वो प्रोजेक्ट्स बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट्स है। इस प्रोजेक्ट से जो इंटरव्यूअर खुश होगा, ना ही उसको कुछ अच्छा लगेगा। तो प्रोजेक्ट्स भी थोड़ा हैवी बनाओ, अच्छा बनाओ, और वो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेगा जब आप कोर्स में आओगे ना, तो आपके पास वो सारा कुछ रहेगा। मेंटर्स आपके साथ डायरेक्टली, जो प्रोजेक्ट बनाने वाले मेंटर हैं वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, आपके साथ लाइव प्रोजेक्ट पे काम होगा। सुधांशु जैसे 3-4 मेंटर आपके साथ काम करेंगे। तो देयर इज नो एनी इशू। दिस इज द रिव्यू फ्रॉम माई साइड, एंड आई रेस्टेड द रिव्यू गिवन बाय सुधांशु एज वेल। तो सुधांशु आप भी कुछ रिव्यू दो इनको। और एक Yeah, आपको मेल भी हो जाएगा रिव्यू का, आपको मेल कर दिया जाएगा रिव्यू का। और आप प्रिपेयर करो, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है, और अब जो भी जॉब बचा भी है वो डेटा साइंस में जॉब बचा है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। और ओके सुधांशु, ओवर टू यू। yeah. As you said, you are enrolled in a data science course, or data science Yes, course, sir. then you should know just basics of data cleaning, data wrangling, how to handle normalization, how to handle outliers, normalization. And the first variate, bivariate, and multivariate analysis of a data set. These are also just basic things that you should know as you are enrolled in a data science Data science. course. Yes, And various things. Yeah. Second one is you have to work hard on the mathematical part, means hypothesis testing, second was probability. Because these days, no, interviewer may ask the mathematical part of a data science. Means you are, if you are enrolled in, if you are assigned a work in data science, then you should know about the other aspects also, means mathematical parts. I think as you studied the part of probability and statistics, yes, sir. have you studied the subject? Yes, sir. Yeah, then you should have knowledge of that particular subject also. Just take some overview regarding hypothesis testing. Second one is conditional probabilities, Bayes theorems, just like. Yes, sir. Then the second project that you have mentioned, it's just a framework. OS got subtle. It's just what you can say. It's not a framework even. It's just extension. It's just what you can say, one line code which we use to organize our data set. Means file in all we use to organize file in the entire data set. So make some industry related project which can be used in real life. So but so just you are Okay. just you are beginners. So I think that's over. If you join with us, then we will work together. So let's tell you. Yeah. And one more thing, you should have knowledge about Power BI or Tableau. At least one of the two visualization technique. Yes, sir. Over to you, Ayush. Yeah, Shivangi, if you have any question, so you ask to Sudhanshu and me also. No, sir, I just want to say that I will work upon myself and my skills so Yeah, that I would be able to. yeah, no, 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 don't feel nervous, don't feel unconfident कि क्या हो गया, कोई इशू नहीं है। No, sir. तो Yes, sir. यू आर इन फर्स्ट ईयर लोग, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस 6 से 8 महीने लगेंगे और एक बार जॉब रेडी हो जाओगे आप, ठीक है। और Yes, sir. आपको कॉलेज वाले जॉब रेडी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका कोर्स ऐसा स्ट्रक्चर ही है कि वो इंडस्ट्री से डिमांड में है ही नहीं। जो कोर्स स्ट्रक्चर कॉलेज का है और इंडस्ट्री का जो नीड है, वो बहुत ही आसमान Mm. जमीन का फर्क है। तो यू हैव टू Yes. फाइंड समथिंग। तो वी आर लॉन्चिंग द प्रॉपर डेटा साइंस कोर्स इन मई और जुलाई। तो आप जुलाई तक एटलीस्ट आप पाइथन का पूरा बेसिक कवर कर लो, क्योंकि Mm. अब सुधांशु जब से आपसे पाइथन का क्वेश्चन कर रहा था तो यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस। तो आप Yes, पाइथन sir. से कम पाइथन पूरा बेसिक कर लो। और आपका एक Mm. महीना बाद मैं फिर से इंटरव्यू लूंगा, मैं आपको भूला नहीं हूँ, मैं आपका फिर से इंटरव्यू लूंगा 1 महीने बाद पाइथन का। सुधांशु इज देयर, Yes. वही फिर से क्वेश्चन करेगा, बस ओनली पाइथन का बेसिक्स। तभी मैं आपको कोर्स में इंटर होने दूंगा, क्योंकि ये जो इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। तो यू जस्ट Yes, sir. प्रिपेयर हार्ड फॉर पाइथन। आप डेली 1-2 घंटे टाइम निकालो पाइथन के लिए।
और थोड़ा सा हार्डली पढ़ाई करो। आई नो कि थोड़ा Yes, सा sir. कॉलेज का टाइम है, हेक्टिक होता है, बट यू हैव टू मैनेज दिस। थोड़ा सा मैनेजमेंट Yes, sir. करना होगा, बाकी ओवर टू यू। Yeah, yeah, we want some serious candidates. So we both together can work hard. Yes, sir. Yeah. और अब हमारा टारगेट है कि आपको नॉट ओनली द डेटा कि हम लोग मशीन लर्निंग वगैरह बाद वाला पार्ट बताएं, और वी विल ऑल्सो हेल्प यू गाइस इन गूगल समर ऑफ कोड एंड ऑल, कैसे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लेना है। तो वी विल ऑल्सो हेल्प यू इन दिस, तो जस्ट बी अलाइन विथ अस। और भी किन्हीं को इंटरव्यू देना हो, किन्हीं को ऐसा आपके भी कॉलेजेस में होंगे, आपके भी क्लासमेट्स होंगे, तो उनको अगर लगता है कि दे आर ओके विथ डेटा साइंस, और उनको एक्चुअली अपने आप को चेक करना है कि उनको कितना पता है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो Mm, इंटरव्यू के लिए। तो वी विल शेड्यूल द इंटरव्यू। yeah. It's just a Okay, sir. screening round. या इट्स Yeah. जस्ट अ मॉक अप इंटरव्यू, वी एक्चुअली वांट टू Hmm. पीपल। मेरे को तो लग रहा था कि मैं आपको हम लोग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा सकते थे, इतना कॉन्फिडेंस था हमें, क्योंकि यू आर फ्रॉम द वन ऑफ द फाइनेंस कॉलेज ऑफ इंडिया। तो बट नो इशू, मेरे को जैसा लग रहा था कि कॉलेज वाला जाए आईटी ही क्यों ना हो, उनका मतलब उस तरह का प्लान है नहीं, वो इंडस्ट्री से मैच कर जाए। तो बाकी बी ऑलवेज आर हेयर फॉर यू, कोई भी इशू हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। तो वी विल कनेक्ट ऑन द, कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई पाइथन में ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल कनेक्ट यू टू सुधांशु, तो ही विल हेल्प यू इन दिस एंड ऑल। Thank you, Simangi. Thanks a lot for joining the session, and Thank you. we will provide all the feedback, mail and all. So, okay. Uh, Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. okay. Bye, bye. Thank you.